Just a bit. Just give me a sec. Okay, so I hope you have learned all the formulas of this integral. Have you started the definite part, or we were doing the uh, indefinite integral? We have completed property, right? Okay, so we have completed this integration by substitution as well, है ना? In the last class, I told you how to perform the integration using the substitution method, right? Yes, sir. The same thing. जो ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है इसी क्वेश्चन पे. So for just take few minutes to revise this concept and okay, just do this question. इससे आपका concept revise हो जाएगा वैसे. That how you are going to integrate this. So this is if you have this function where function is 2x sine of x square plus 1. I think we did this question, right? I think we did this question. Yeah, we did this question. Not this one. You have a sine of tan inverse x upon 1 plus of x square. You have to differentiate integrate this with respect to dx. Let's try to solve this question. In this question, you have to use the method of substitution. ठीक है, आप कुछ ऐसा assume करोगे जिसको आप substitute करोगे so that you can get the derivative that is already present in your this function so that you can remove this dx and whatever it takes to भी उसके साथ जाएगा like here 1 plus x square जाएगा.
Yes, sir, done. Done. Mm-hmm. What's the answer? Minus cos tan inverse x plus c. Yes, Yes, sir. cos tan inverse x plus c. Yeah, that is right. So we So also did this question before. we did this question. Yes, कोई sir. बात नहीं, उससे कोई इशू नहीं है, बट मैं बस कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते थे, दैट्स इट। कि आप कैसे वो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं ना, इसमें आपने टेन इनवर्स एक्स को वाई मानना होगा, राइट? जी। क्वेश्चन सेम हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ओके, सो द नेक्स्ट property, or you can say the formula that you have to learn is integration of cot inverse of x. That is log of sin x, log of modulus of sin x plus c, right? And okay, can you prove this? Actually, this is you have to learn this, but can you prove this? अगर ये आपके एग्जाम में आता है, so how you will prove this? सर cot x को हम लोग लिखेंगे cos x by sin x हम्म, then और फिर सब्स्टिट्यूशन sin x इक्वल्स टू t, ऐसा कर सकते हैं। okay, ठीक है, सही, ऐसे ही होगा, right? And for secant of x, you have log of secant x plus tan x, log of sec x plus tan x plus c plus c. That is for secant of x. Now for cosecant of x, for cosecant of x, you have log of cosecant x minus cot x, right? Cosecant x minus cot x plus c. Oh, plus c. ठीक है. So these are the basically some formulas, and important भी ये वाले formulas, because इसको आप इतना प्रूव करने नहीं जाओगे, so you will have to directly learn this. ठीक है. All right. Now if you have done with this, then let's solve this question. You have to integrate sine cube of x into cos square of x. Try this question. See, इस क्वेश्चन को आप ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हो, बट क्योंकि अभी हमने वो किया नहीं है, सो यू हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. After this, I will give you one more question, then we will move to the integration by uh, that parts, integration by parts. We have three methods: integration by substitution, integration by parts, and then integration by partial fraction.
Done, sir. Good. क्या आंसर? Minus cos cube x by 3 plus cos 5 power 5 by 5 plus c. Minus 1/3 cos cube of x plus 1/5 cos 5 of x plus 3 आ रहा? Yes, sir. ठीक है, बाकी का है? सर ओके गुड. Solve this one. 1 upon 1 plus 10x dx. इसको सॉल्व करो. So in trigonometric functions, अगर trigonometric functions आ रहे हैं आपको integration में, so basic the most basic step is to convert those things into the sin and cos things. उसके बाद थोड़ा simplify करो, आ जाएगा आंसर. Yes, sir, done. Done. Yeah. Okay. Wait a minute. बाकियों का भी हो गया? कितना आ रहा है? So x by 2 plus 1 by 2 log mod cos x plus sin x That's it. plus c. ठीक है, सेम आंसर आया बाकियों का भी. 1/2 of x, that is x by 2 plus 1/2 log. इसमें दो बार सब्स्टिट्यूट करोगे, पता है ना? आपने ऐसे किया है ना? इब्राहिम यूटेड टू, हाँ इब्राहिम आपने किया था ना? जी 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 जी. आपने ऐसे किया ना, दो बार इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, राइट? जी, दो बार करना पड़ा था सब्स्टिट्यूशन. एक बार हम लोग ने ये cos x plus sin x plus cos x minus sin x न्यूमरेटर में लिए थे, फिर ऐसा करें था हम लोग ने. ठीक है ठीक है. बाकी का आ गया सेम आंसर. अंजलिना आपका है? Yes, sir. अली आपका? यस सर सो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं. 7. Okay. Now, this question to answer of
integrate this. Your m should not be equal to wait. Your m should not be equal to 1. इसमें वो कुछ खास है नहीं, इजी है वैसे। Answer. Okay, what's the answer? Log x raised to 1 minus m divided by 1 minus m plus c. Okay, plus c. Log c मत भूल जाना उसके साथ वाला। Log x raised to power 1 minus m upon 1 minus m plus c, right? Yes, sir. ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या किया आपने? T is equal to log x. P equals to log x, then dt is equals to 1 by x dx, वहां से 1 by x ये रहा और dx इसके साथ जो होगा वो हट जाएगा, and this is going to be 1 upon tm, and in the numerator you will have, when you will bring that 1 upon tm in the numerator, you will have t power minus of m, फिर उस पे an वाला फॉर्मूला xn वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। Yes, That's sir. it. Okay, so we have did this part, integration of 1 upon 1 plus tan x, instead of tan x, just 1 upon 1 plus cot x. इसमें सेम तरीके से करना जैसे आपने सेम वही किया था, cos साइन में चेंज करो एंड लेट्स सी व्हाट यू हैव कमिंग विद।
Done, sir. Yes, sir, done. So you're muted. Sorry. Answer is this. Yes, sir. Okay. Okay. So let's try this question a little bit on the higher level. It is from the competitive exam. इतना मुश्किल नहीं है बस आसान है बहुत. I know you guys can do. Let's see देखते हैं. This is based on the JEE main. That is competitive exam in India. इतना टफ आपसे वैसे टफ नहीं है वैसे. इतना लेवल का आपसे सीबीएसई में नहीं पूछेंगे पर फिर भी प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस. कौन सा है? क्वेश्चन आसान है बहुत वैसे भी. कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन है बस. दैट्स इट.
Is it done? Ali, is it done? No, sir. कुछ डाउट आ रहा है या फिर सॉल्व कर रहे हो इब्राहिम? सॉल्व कर रहे। Now here you have to use the property of integrals. Like you can write this algebraic integral like this, sorry, minus. हो गया बाकी होगा let this d theta dot x. Have you done? Have you done? किसी का आंसर नहीं आया क्या इसका? Ibrahim, have you got the answer? Ali? सर No. And Angelina? So I didn't do with science, I didn't get the answer. नहीं किया. अच्छा. यहाँ तक क्लियर आपको? Is it clear till now? तो यहाँ पे क्या करना है? एक और बार सब्स्टिट्यूशन करोगे. दिस इज व्हाट साइन का होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा. इसको यहाँ पे रख लो. इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस वन. इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ थीटा कॉस पे थीटा का इंटीग्रेशन होगा. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट कॉस थीटा अगेन. कॉस थीटा को आप कुछ भी मान लो, टी मान लो, लेट अस सपोज टी. सो दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा डॉट डी थीटा इज इक्वल टू डी टी. सो इंटीग्रल में जब आप पुट करोगे तो यू आर गोइंग टू हैव minus of t square dt. So for this you will get t cube by 3 and plus c. So see here you will get c2, right? c2 यहाँ मिलेगा और यहाँ पे आप लोग को कुछ c1 मिलेगा. So minus of t cube upon 3 and you have to put value of t
back in this equation. So this will be minus of cos cube theta upon 3 plus C2. And from this, you got minus of cos theta upon plus C1. So your total answer will be, the final answer will be minus of cos theta, minus of cos theta plus, plus कितना आएगा? Are we missing something? For this, we got minus of cos theta plus C1, and for this, sin theta cos square theta. Okay. For this, we will get this thing, theta cos theta will be t, and minus of sin theta d theta is equals to dt, right? Here I have a minus of e square. So I substitute this over over in the over here. So dt is minus of sin theta d theta. So यहाँ पे वो minus आ जाएगा in t square for this cos theta. Okay. And this is going to be minus of t cube upon 3 plus c2, right? So I will get a minus of cos cube theta upon 3 plus c2. And this was for this term. And for this one, we have minus of cos theta plus c1. Minus of cos theta plus c1. Okay. And again minus of this cos cube theta upon 3. And combining c1 and c2, I can write only c, because this is an arbitrary constant, so I can merge them and write a single c. So this is the answer for this question, right? And see, if you want to substitute it back, like what you have supposed your theta, see x was sine theta, so you can use that. You can use theta is equals to sine inverse of x, and you can put in this. Okay, is it clear? Is it clear? So why are we using sine and cos for this question? Why we are using sine and cos? So how you will do this? How you will eliminate this? See, you don't know how to integrate by parts. Otherwise, you can do like x cube को आप कुछ और मान लेते हैं and 1 upon under root 1 minus x square. We have formula for that. But until or unless you don't know that concept of integration by parts, तो आपको तब तक substitution से चलना होगा. And substitution says that if you have a 1 minus x square inside your root, then your substitution for x will be either sine of theta or you can substitute cos of theta so that your root can be eliminated, right? Yes, sir. मैंने साइन थीटा पुट किया रूट के अंदर, तभी ये रूट एलिमिनेट हुआ है. एंड देन रेस्ट इज आई थिंक इजी पार्ट, है ना? ठीक है. मैंने साइन क्यूब थीटा को क्या किया, आई wrote like sine theta into 1 minus cos square theta, that is sin square theta. I break that into sin theta into sin square theta so that I can get this sin theta and इसको मैं अलग से minus cos theta लिखूं. And for this sin theta cos theta, I again substituted something like if I'm having this square thing, है ना? जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कोई स्क्वायर आता है, सो ऑलवेज ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इट टू समथिंग सो दैट उसका डेरिवेटिव आपको आपके पास ऑलरेडी इंटीग्रल में दिया हो. सो अगर मैं cos थीटा को सब्स्टिट्यूट करूंगा एज अ टी, सो आई विल गेट दिस डिफरेंशिएशन एज माइनस ऑफ sin थीटा d थीटा एंड t इज गोइंग टू बी dt. सो उसके बाद मैं पुट करूंगा इसमें एंड देन आई विल गेट दिस आंसर. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir.
Okay, so x square. Okay, अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज करते, if you don't use this x is equals to sin theta, then how you can solve? If you have to use the substitution, what's in your mind? Tell me. So you can take t is equal to 1 plus 1 minus x squared. Okay, Uh, t then equals to 1 minus x square. ठीक है, उससे भी हो जाएगा. t square will be 1 minus x square. ठीक है, मैं t स्क्वायर को मान लेता हूँ 1 minus x square. तो 2t dt will be minus of 2x dx. राइट, ये होगा. yes, sir. सो इससे मेरे पास इन द न्यूमरेटर आई कैन ब्रेक दिस x क्यूब एज अ x स्क्वायर एंड x, है ना. सो x स्क्वायर की जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, दैट इज x स्क्वायर इज 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर and we have left with 1x. So that is going to be minus of this 2 and 2 will get cancelled out. 1x, so this is going to be minus of t dot dt. And over here we have t. So this is t and t will get cancelled out. And we are having 1 minus t square dt. Okay, you can solve like this also. इससे भी कर सकते हो. और अगर 1 minus x square ऐसे दिख रहा है आपको, तो जनरली वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्री. हम x की जगह पे साइन थीटा या cos थीटा पुट कर सकते हैं. बट दिस इज ऑल्सो गुड, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, इससे भी हो जाएगा. एंड एट द लास्ट सब कुछ करने के बाद टी की वैल्यू इसमें पुट कर देना. ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड. ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूशन इज क्लियर टू. हाउ वी यूज दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड. Yes, yes, sir. कॉस स्क्वायर का तो आसान होता है, इसका भी आसान होता है. ठीक है. ओके, टेल मी हाउ यू विल सॉल्व दिस. You must know the identity if you want to solve this question. Sine of 2x dot cos of 3x. I just want to see if you remember that identity, that CD formula in trigonometry. उससे अगर आता है तभी हो पाएगा क्वेश्चन में.
Yes, sir, done. Done. Mhm. Okay. So, It will be minus 1 by 10 hmm, uh, cos 5x okay. minus 1 plus 1 by 2 cos x plus c. ओके, so इसमें आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? So sin x into cos y is equal to 1 by 2 sin x plus y plus sin x minus y. ओके ओके, गुड, ग्रेट। बाकियों का आ गया आंसर? Sir. Rest of you have got the same answer. Minus of 1 by 10 cos of 5x plus 1 by 2 cos of x plus c. Yes, sir. ठीक है, okay. Now, how about this? Cos of 5x, cos of 4x, and cos of 6x dx. This you have three terms: cos of 2x, cos of 4x, and cos of 6x. Same वैसे ही करना है, but you have three, so you have to make a pair, then solve that. उसके बाद solve करना है.
Done, sir. Okay. Okay, so what's the answer? 1/4 into sine 12x by 12 plus x plus sine x by x plus sine 4x by 4 plus c. Sin x by x. Sine 4x by 4. It's 1/4 sine of 12x by x, 12x by 12. Okay. Plus sine of 8x by 8 plus sine of 4x by 4 plus x, and then you have a c. Same answer. Yes, sir. Okay, rest of you. Is it same? Yes, sir. That's it. So now integrate this one. You have to just use the trigonometric formula. इसको cos c minus cos d वाला formula use करना in both numerator and denominator. उसके बाद simplify करो and then integrate. Cos of c minus cos of d, that is 2 minus sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. So instead of that formula, can we use cos 2 theta's formula instead? Cos 2t. Yeah, you can use that also. Okay, you can use that also. इससे भी आपका सिंगल थीटा में आ जाएगा आंसर. ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं. See, methods are very, you have the multiple methods, पर उसका आंसर सेम आना चाहिए. And in this indefinite integral, your answer might not be the same exactly that is written in the textbook, but in definite you must have the same answer, because in that limit you must have to uh, get the same answer. But indefinite में थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा इधर उधर. Indefinite में different answers आ सकते हैं.
Done. So कितना आंसर? 2 sin x plus 2x cos x plus c. cos x plus c. 2x cos x cos alpha. Cos alpha. cos alpha. And since you are integrating this with respect to x, so your alpha will be constant. So this whole cos alpha will be constant. ठीक है, इसको बाहर निकालोगे तो बाहर आपके पास x आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1. ठीक है, इब्राहिम एंड अली, हैव यू गॉट द सेम आंसर? Yes, 2 sir. Yes. 2 cos x plus 2 cos alpha, sorry, 2 sin x plus 2x cos alpha plus c. ठीक है, राइट. इसका cos अल्फा cos x का हो जाएगा sin अल्फा, इसका हो जाएगा 2, sorry, sin x. And for this cos alpha, your cos alpha is constant, so cos alpha, and you have to multiply x, so mm, x dot plus c. तो ये आएगा. ठीक है. sir. Okay, so now let's move to some particular functions, integral of some particular functions, in which you have some around 5-6 formulas. You have to remember these also. So the first one is integration of dx upon x square minus a square. If you have this type of form, so integration for this is 1 upon 2a log of 1 upon 2a log of x plus a minus x minus of a upon x plus of a and plus of c. ठीक है. When your integral is in this form, like dx upon x square minus a square, so you will write it as a 1 upon 2a log of log of modulus x minus a and upon x minus a and upon x plus a plus c. ठीक है. For the second one, you have a dx upon a square minus x square. ये जो a आपका है, that is a constant, but x is variable. So for this, you will have 1 upon 2a log of a plus of x upon a minus of x plus n plus c. For dx x square plus a square, this is very important. 1 upon a tan inverse x by a plus c. ठीक है. For dx upon under the root x square minus of a square, you have a log of x plus under root x minus a square plus c. ठीक है. And for dx upon under root a square minus x square is equals to sine inverse of x by a plus c. And the last, we have dx upon under root x square plus a square plus a square, इसका आएगा log of x plus under the root x square plus a square plus a square plus c plus c. See, what is the difference? What is the similarity in this? What is difference in this formula and this formula? यहाँ पे जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है इसके साथ, यहाँ जब प्लस आता है तो इसके साथ यहाँ प्लस आता है. That's it. Plus to same in these two formulas. And these formulas are important for
your next chapter, that is the application of derivative. There you have to find the area under the curve. So these three things, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, इन सब पे यूज होते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स to calculate area, to calculate area under the curve, area under curve. ठीक है, just take few minutes and learn this formula. Is it done? There are total 6 formulas with this type of category. इसमें से जो लास्ट के 3 है, that is going to be useful in your application of integrals. All right. Is it clear? Can we move to the question? Yes, sir. Integration of dx under root 5x square minus of 2x.
You know the completing the square method? Do you know what is completing the square method? Anyone? किसी को पता है? What is completing the square method? नहीं पता? Anyone? किसी को पता है what is completing the square? अली, इब्राहिम, अंजलिना, किसी को पता है? So is it the method where you rewrite the quadratic equation to make it easy to solve? Rewrite Yes, the so quadratic equation. we'll take the coefficient of x and शायद we'll divide it by 2 and then we'll add and subtract the square of the moon, ना? ऐसा कुछ Yeah, करते हैं ना, that is yeah, ठीक है। x का ताकि अपने कोफिशिएंट को भी एक लेते हैं। फुल प्रॉपर। In this completing the square method, my x square coefficient should be 1. So first of all, my first aim should be make the x square coefficient equals to 1. यहाँ पे आपका 5 है x square का coefficient. So you have to make it 1. So for that, what you will do, you will take a 5 outside and you will write this as a x square minus of 2 by 5x. And then उसके आगे जो x के साथ coefficient है उसका हाफ लेके प्लस माइनस करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर को प्लस माइनस करते हैं। This is all done just to get you in the square form, right? A x square minus a square, ठीक है? इस फॉर्म में लाने के लिए आपको ये करना पड़ता है। देन ओनली यू कैन यूज दैट फॉर्मूला जो हमने अभी तक ये फॉर्मूला सीखा है, ये वाले फॉर्मूले। रिमेंबर देयर इज अ रूट।
Is it done? नहीं हुआ क्या? Done, sir. Is it clear till now? Yes, Okay, sir. done. Yes, sir. So what's now? 1 by root 5 into log modulus x minus 1 by 5 plus root of x square minus 2x by 5 modulus plus c. Yes. Okay, all of you got the answer? Ali and Ibrahim, have you got? Sir. ठीक है. So this is the completing of square method. This part is completing the square method where you have to make like this. ठीक है. इसमें आप क्या करते हो, जो आपको your x square coefficient should be 1 and whatever the coefficient you have with this x, you have to divide that by 2, that is 1 by 5, and you have to add that square and subtract that square. ठीक है. फिर इसको combine करोगे, this is going to give you x minus 1 by 5 square and this is going to give you 1 upon 5 whole square. All right. So वहां से आप x square minus a square वाला formula, this one, this this formula you can apply and you can get the answer. Okay. Okay, so 2x 4x plus 6 4x plus 6. Okay, so all right. So this was the some special formulas of this integral, and can we do one question? 5. Okay, I think for this you have to uh, I have to teach you the partial fraction method. Do you know about partial fraction method? Do you know what is partial fraction? Integration by partial fraction? No? किसी को पता है what is partial fraction? Am I audible? Ali, do you know what is partial fraction? No, sir. No. Angelina? Sir. Ibrahim? सब पता था हम्म. लेकिन भूल गया शायद. कर तो चुके हो ये वाला चैप्टर आप. हाँ लेकिन भूल गया, बहुत दिन हो गए ना पढ़ के.
उड़ गया, disappointed. नहीं, हम लोग एक फ्रैक्शन को लेते हैं, then we split it like a by x plus a divided by b by x plus b, है ना? Yeah, ऐसा something like that. So अगर मान लो आपके पास, if you have this type of fraction, ठीक है, तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पे कैसे लिख सकते हो, लाइक a अपॉन x माइनस ऑफ a प्लस b अपॉन x माइनस ऑफ b, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंड आफ्टर सॉल्विंग द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, a एंड b की वैल्यू जब आपके पास आएगी तो आपको यहाँ पे पुट करना है, एंड सी इसका इंटीग्रेशन अगर करना है आपको, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, so this is a little bit complicated है ना, you don't know how to solve, there is a product in the denominator, so how you will solve this. So to tackle this, you have this partial fraction where you can break this fraction into this plus this, so that you can easily integrate, and using the property of integration you can integrate by one, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, then integrate this one, ठीक है. So this is a method, and see, uh, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? Okay, so I'm solving a question quickly on this. Okay, so this is my fraction. Okay, this is 1 upon x minus of sorry, x plus of 1 and x plus of 2. So I don't know how to integrate this, but uh, it can be helpful if I get something like a upon x plus 1 and b upon x plus 1. So I will assume this as a x a upon x plus 1 and b upon x plus 2. ठीक है, ऐसे मैं assume करूंगा. Then I will solve in the RHS. I will keep my left hand side as it is, and I will solve in the RHS. That is going to give you x plus 1 plus x plus 2. And for A, you will have x plus of 2. And for B, you will have x plus of 1. Okay. So after this, you will get ax plus bx plus 2a plus b. And in denominator, you have x plus of 1 and x plus of 2. All right. So now if you want to compare this, so you can actually cut this denominator from the both sides. Now if you want to, and in numerator what do you have? You have only 1, ठीक है? आपके पास numerator में 1 है. Now you have to compare. In the left hand side, what is the coefficient of x? See, you don't have any term of x, so coefficient of x should be 0. So you have to compare with the RHS, जहाँ पे a plus b coefficient है, इसका आंसर 0 है, इसका coefficient 0 है, so this is going to be 0. And you have a constant 1, है ना? You have one constant, so your 2a plus b is 1. ठीक है? Now you have to solve this. When you will solve this, so you will get a is equals to 1, a is equals to 1, and b is equals to minus of 1. So a is equals to 1, b is equals to minus of 1. Now you can easily substitute over here a upon 1, a upon x plus 1 and b upon x minus 1. So उसका इंटीग्रल आ जाएगा 1 upon x plus of 1 minus 1 upon x plus of 2. Now you can easily integrate this, है ना? इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा with respect to dx. With respect to dx, so if you want to integrate this, so इसका इंटीग्रेशन होता है log of x plus 1, log of x plus 1 minus log of x plus 2 and plus c. Okay, and this is log a minus log b, so you can write it as a log of x plus 1 upon x plus 2 and plus of c. So this is the final answer. Okay, so this is a method of a partial fraction. This is basically
वन टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अभी आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर भी आ सकता है ना, यू कैन गेट अ क्यूब ऑल्सो। फॉर दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। So this is a basic of partial fraction, how you will change this product into this simpler fraction, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ तक पहुंच जाओगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन मुश्किल है थोड़ा सा। ऑलराइट, इज इट क्लियर? दिस मेथड इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. इब्राहिम, आपको याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। देन एंड अंजलिना एंड अली, आप लोग को समझ आया मेथड है? Yes, sir.